Hello everyone. At this class, I'm going to discuss some short questions of the chapter differential equation. That means questions carry 1 mark. ठीक है, जो ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में आ गया है और वैसा मॉडल का क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा ओनली डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर. ओके, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस भी रहेगा. दैट मीन्स 4 ऑप्शंस विल बी गिवन और डायरेक्ट क्वेश्चन भी रहेगा 1 मार्क का. ठीक है, so let us discuss some questions. The first question is, find the order and degree of the differential equations if defined. If defined इसका मतलब अगर एग्जिस्ट करेगा, अगर डिफाइंड करेगा तो ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, find the order and degree of a differential equation. So what is the definition of order of a differential equation? We know order means the highest order derivative of a differential equation. मतलब एक differential equation को मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है, that is your order only. अगर एक बार डिफरेंशिएट किया गया है तो उसका ऑर्डर 1 होगा. अगर 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है तो उसका ऑर्डर 2 होगा. 3 टाइम्स डिफरेंशिएट किया जाएगा तो ऑर्डर 3 होगा. मतलब एक इक्वेशन में मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है एक टर्म को, दैट इज योर ऑर्डर. ओके, इन ऑर्डर टू फाइंड द डिग्री, मेरा बात ठीक से सुनना है. इन ऑर्डर टू फाइंड द डिग्री ऑफ एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, first of all you have to check whether the given differential equation is polynomial or not. ऑर्डर के लिए ये मैटर नहीं करता, लेकिन डिग्री फाइंड आउट करने के लिए ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म, देन डिग्री इज अनडिफाइंड. ओके, if the differential equation is in polynomial form, then only we can define degree of a differential equation. ठीक है, तो मैं अभी एग्जांपल्स मतलब क्वेश्चन जो है क्वेश्चन से ही डिस्कस करूंगा कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में है और कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है. ठीक है, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज xy into d square y by dx square plus x into dy by dx whole square minus y into dy by dx is equal to 0. So this is a differential equation. How can we say that it is a differential equation? Because the definition of differential equation is there will be one dependent variable, one independent variable, and the derivative of dependent variable with respect to independent variable must be there in that equation. ठीक है, मतलब dy by dx होना चाहिए, वेरिएबल x होना चाहिए, y भी होना चाहिए वो इक्वेशन में, then only we can say that it is a differential equation. So it is a differential equation, and whether it is in polynomial form or not, polynomial form में है या नहीं है उसके लिए चेक करना है पहले इक्वेशन का पावर. पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? होल पावर, होल नंबर से शुरू होता है, सब पॉजिटिव वैल्यू. पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, नेगेटिव में नहीं हो सकता है. ठीक है, अगर पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन में हुआ तो देन वी कैन नॉट से इट इज इन पॉलिनोमियल फॉर्म. ओके, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर कितना है? 1. डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर है, +2 ओनली, पॉजिटिव वैल्यू. डी वाई बाई डी एक्स पावर इज पॉजिटिव ओनली, सो दैट मीन्स क्लियरली वी कैन से दैट इट इज ए polynomial. It is in polynomial form. Now since it is in polynomial form, so Roman 1, question number 1, Roman 1, therefore the order of this differential equation is 2. because ये differential equation को maximum 2 बार differentiate किया गया है. which term? this one, d square y by dx square. don't think this one, dy by dx. dy by dx means called first order derivative, मतलब एक ही बार differentiate किया गया है. यहाँ पे पावर 2 है या 20 है या 200 है, इट डजंट मैटर. dy by dx वो टर्म को देखना है. dy by dx means first order derivative, whereas d square y by dx square means second order derivative. So that means the order is 2. From this
term, from the first term we can say. Okay, so order 2. And what about degree? Since it is a polynomial form, so we can define degree also. So degree का definition क्या है? The highest power of the highest order derivative. The highest power of the highest order derivative is called the degree of the differential equation. Now since here the order is 2, because from this term we can say, so इसका power कितना है? Power is 1, so that means degree is 1. Degree means the highest power of the highest order derivative. So highest order derivative is this one only. तो इसका highest power भी बोल सकते हो, और you can say power also, because highest order derivative का जो power होगा वो ही है degree. Okay, but degree के लिए वो condition याद रखना पड़ेगा. If it is not in polynomial form, then degree is undefined. Here it is in polynomial form. That's why we can say that degree is defined only. Okay, so question number 1, Roman 1 का answer है order 2, degree 1. Let us check the second question. The second one is y triple dash. Triple dash means third order derivative. Y triple dash plus y square plus e to the power y dash. तो e का जो power है वो differentiation form में है, yes or not? e का जो power है, this is not like e to the power y or e to the power x. This is e to the power y dash. It means the power is in differentiation form. अगर e का जो पावर है एक्सपोनेंशियल का जो पावर होगा वो अगर डिफरेंशिएशन फॉर्म में है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का जो एंगल है वो अगर डिफरेंशिएशन फॉर्म में है, लॉगरिथम का जो वैल्यू होता है वो अगर डिफरेंशिएशन फॉर्म में है, देन ओनली वी कैन से दैट इट इज नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म. नाउ सिंस इट इज नॉट इन पॉलिनोमियल फॉर्म, देन डिग्री इज अनडिफाइंड. ओके, डोंट राइट 0, डिग्री इज अनडिफाइंड. ओके, तो डिग्री कब अनडिफाइंड होगा? जब एक्सपोनेंशियल का पावर डिफरेंशिएशन फॉर्म में होगा, जब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल डिफरेंशिएशन फॉर्म में होगा, जब लॉगरिथम का वैल्यू डिफरेंशिएशन फॉर्म में होगा, देन डिग्री इज ऑलवेज अनडिफाइंड. ओके, अपार्ट फ्रॉम पॉलिनोमियल यू हैव टू चेक दीज 3 ऑल्सो, बिकॉज ये 3 कंडीशन भी डिटरमाइन करता है कि the equation is not in polynomial form. Okay, these 3 conditions means e to the power y dash, मतलब e का पावर अगर डेरिवेटिव फॉर्म में होगा तो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का एंगल अगर डेरिवेटिव फॉर्म में होगा तो, एंड लॉगरिथम का वैल्यू अगर डेरिवेटिव फॉर्म में होगा तो, देन वी कैन से दैट the equation or the differential equation is not in polynomial form. And if the differential equation is not in polynomial form, then degree is always undefined. So in this case, so question number 1, Roman 2, order we can determine. Order is here 3 because ये इक्वेशन को मैक्सिमम 3 बार डिफरेंशिएशन किया गया है, so order is 3. But degree is undefined. Why? What is the reason? Because the power of e is in differentiation form. Since the power of e is in differentiation form, that means we can say that it is not in polynomial form. Polynomial form में नहीं होने से डिग्री अनडिफाइंड ही होगा. Okay? So this is all about the second question. तो दोनों मॉडल का क्वेश्चन में डिस्कस कर दिया. फर्स्ट में ऑर्डर डिग्री दोनों ही फाइंड आउट कर सकेगा बिकॉज पॉलिनोमियल फॉर्म में था. सेकेंड केस में पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, इसीलिए डिग्री अनडिफाइंड है, बट वी कैन डिटरमाइन ऑर्डर. ऑर्डर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, बिकॉज ऑर्डर के लिए पॉलिनोमियल है या नहीं है वो चेक करना जरूरी नहीं है, लेकिन डिग्री के लिए वो चेक करना जरूरी है. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन. Now check the second question. Second question is the number of arbitrary constants. The number of arbitrary constants in the general solution. GS means general solution of a differential equation of 4th order. You are asked to find the number of arbitrary constants in the general solution of a differential equation of 4th order.
तो अगर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 है तो उसका नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या हो सकता है इन द जनरल सॉल्यूशन. एक्चुअली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वी ऑल नो. डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर ऑलरेडी हो गया, ये सब तो रिवीजन है. सो वी ऑल नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. वन इज जनरल सॉल्यूशन, another one is a particular solution. So what's the difference between general solution and particular solution? General solution में at least एक arbitrary constant होता है, whereas particular solution is free from arbitrary constant. Okay? General solution में at least एक arbitrary constant होता है, लेकिन particular solution में एक भी arbitrary constant नहीं होता है. चैप्टर पूरा खत्म हो गया. So you all know the difference. Again I am repeating the difference between general solution and particular solution. So since the order of the differential equation is 4 and you are asked to find the general solution, अगर differential equation का order 4 है तो number of arbitrary constants in the general solution of a differential equation will be 4 only. Order जितना होगा, number of arbitrary constant in the differential equation will be same only. So answer will be 4. अगर यहाँ पे order fifth order दे दिया तो फिर number of arbitrary constant 5 होगा. Order अगर third order दे दिया so number of arbitrary constant 3 होगा. Only in case of general solution, not in case of particular solution. ठीक है, third question check करना है. The number of arbitrary constant in the particular solution, PS means particular solution, the number of arbitrary constants in the particular solution of a differential equation of third order. The number of arbitrary constant of a particular solution of a differential equation of third order are 0, 2, 3, 4. Since we know that particular solution is free from arbitrary constants, we know particular solution is free from arbitrary constant, तो उसका differential equation का order third order है या second order है या order 4 है, it doesn't matter. Always number of arbitrary constant will be 0 only. Okay? So the number of arbitrary constant in the particular solution of a differential equation of third order is always 0. Not only third order, if the order is second order or fourth order, answer will be 0 always. But in case of general solution, order जितना होगा, number of arbitrary constant उतना ही होता है. ठीक है? So this is the difference between question number 2 and 3. Confusion नहीं रखना है, इसलिए मैं difference के हिसाब से मैं क्वेश्चन लिखा. ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन में जैसे एक में पॉलिनोमियल फॉर्म में है और एक में नहीं है, एक्सप्लेन कर दिया. सेकेंड और थर्ड में डिफरेंस बिटवीन जीएस एंड पीएस एक्सप्लेन कर दिया. नाउ लुक एट द फोर्थ क्वेश्चन. द फोर्थ वन इज which of the following differential equation has y is equal to c1 into e power x plus c2 into e power minus x as the general solution. ठीक है? This is one equation. Don't think that this is a differential equation. This is not a differential equation. It is a normal equation. क्यों ये differential equation नहीं है? Because differential equation का definition क्या है? जिसमें dy by dx का एक टर्म होना चाहिए. Yes or not? और क्वेश्चन से ही तो पता चलता है which of the following differential equation has this as a general solution. So which of the following differential equation means here options are given in terms of differential equation. This one is a normal equation. क्यों normal equation बोला गया है? Because बोला गया है कि this equation has a general solution. तो general solution में minimum एक arbitrary constant होता है. Yes or not? So just you have to check how many arbitrary constants are there in this equation. Don't think that it is a differential equation. I am repeating again and again. This is a normal equation. Okay? Options are given in terms of differential equation. इसीलिए तो क्वेश्चन में पूछा गया है which one of the following differential equation has this equation as a general solution. So this equation contains two arbitrary constants. Yes or not? C1 and C2. एक बात याद रखना पड़ेगा, जब एक नॉर्मल इक्वेशन दिया रहता है
वहां से अगर डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करना पड़ता है तो देन यू हैव टू चेक द गिवन इक्वेशन कंटेन्स हाउ मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स. Okay, if the equation contains only one arbitrary constant, then you can differentiate only one time to construct a differential equation. If the equation contains two arbitrary constants, then you have to differentiate the given equation two times to construct a differential equation. If the equation contains three arbitrary constants, then you can differentiate maximum 3 times to construct a differential equation and so on. Okay, so since the equation contains two arbitrary constants, that is C1 and C2, so in order to get a differential equation from the given equation, you can differentiate the given equation maximum 2 times. So differentiate the given equation. Here the given equation is y is equal to c1 e power x plus c2 e power minus x. So find out y dash. Y dash is equal to c1 differentiation of e power x. We all know e power x only. C2 differentiation of e power minus x is minus of e power minus x. Yes. Then find out y double dash. Actually the question is why we need to differentiate 2 times only, because the differential equation, if the equation contains two arbitrary constants, you have to differentiate 2 times to eliminate those arbitrary constants. Okay, the differential equation should not carry a single arbitrary constant, so that's why you have to differentiate it to eliminate those arbitrary constants. अभी देखो कैसे मैं eliminate करता हूँ. y डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जब किया तब भी c1 c2 रह गया. सो वन मोर टाइम वी कैन डिफरेंशिएट इट. यस, और एक बार चांस है. सो इफ यू डिफरेंशिएट द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, देन ओनली यू विल गेट y डबल डैश. सो y डबल डैश इज इक्वल टू c1 e पावर x minus minus plus c2 e to the power minus x, and this is the value of y only. c1 e power x plus c2 e power x is nothing but the value of y. So which implies y double dash minus y, this is equal to 0. Can I write or not? Now you can check whether this differential equation carry any arbitrary constant. No, that's why to eliminate those arbitrary constant only you have to differentiate according to the number of arbitrary constants. ठीक है. So y double dash minus y is equal to 0 is the differential equation of the given equation. So which option is the correct answer? Second option, y double dash minus y is equal to 0. Okay, like this some more one mark question I will discuss now. So have a look at the next question. The general solution of the differential equation dy by dx is equal to e to the power x plus y is what? Okay, you are asked to find the general solution of the differential equation. So since you are asked to find the general solution, that means it must carry at least one arbitrary constant. So look, कितना arbitrary constant हो सकता है देख सकते हैं हम लोग. So here the equation is question number 5 solution. dy by dx is equal to e to the power x plus y. So you are asked to find the general solution. मतलब general solution जब निकालना है, मतलब ये differential equation को normal equation में लाना पड़ेगा. एक बात याद रखना है, जब normal equation से differential equation में जाना पड़ता है, then you have to differentiate it because you need differential equation, so you have to differentiate it. Just like question number 4, इसके पहले जो last question discuss किया था उसमें क्या था, normal equation दिया गया था, you are asked to find the general solution, sorry differential equation. क्या किया था, differentiate किया था. लेकिन जब एक differential equation से normal equation में जाना है, then you have to find the antiderivative of the given equation. Antiderivative means integration. Okay, so यहाँ पे differential equation दिया गया है and you need to find the general solution. So from differential equation, if you want to find the general solution or particular solution, then you have to integrate the given differential equation. And for integration,
there is one method that is called variable separable method. Yes or not? Actually so many methods are there. So there is one method variable separable method. So मैं वहां ये क्वेश्चन में वही यूज करने जा रहा हूं. So since here the equation is dy by dx is equal to e to the power x plus y, e power x plus y can be written as e to the power x into e to the power y. So which implies dy by e power y is equal to e power x into dx. क्या यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड, because we need to find the general solution and for general solution only you have to integrate it. इंटीग्रेट करने के लिए वेरिएबल को तो सेपरेट करना पड़ेगा, तो इसीलिए dy के साथ e पावर y को लेके आया और e पावर x के साथ dx को अरेंज कर लिया. ठीक है. नाउ इफ वी इंटीग्रेट इट, that is integration e to the power minus y dy is equal to integration e to the power x dx. So what is integration e power minus y? We all know integration of e power minus y is minus of e power minus y. This is equal to integration e power x is e power x plus c. Don't forget to write c. Both side में constant use नहीं करना है. Right hand side में generally हम लोग constant term लिखते हैं. ठीक है. So e minus of e power minus y is equal to e to the power x is e plus c. Therefore, if I take minus common, e to the power x plus e to the power minus y, this is equal to c, or we can write e to the power x plus e to the power minus y, this is equal to c. Because if you write here also minus, minus c is equal to c only, because c is an arbitrary constant. Okay, so the general solution of the given differential equation is e to the power x plus e to the power minus y, which is equal to c, where c is an arbitrary constant, because you need to find general solution, so it must carry one arbitrary constant, at least one arbitrary constant. Okay, you can check there is no derivative term like dy by dx or d square by dx square नहीं है ना, because general solution का मतलब क्या है? नॉर्मल इक्वेशन होगा. डिफरेंशियल इक्वेशन से नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए इंटीग्रेट करना है, नॉर्मल इक्वेशन से डिफरेंशियल इक्वेशन में जाने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ता है. ठीक है. सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the integrating factor. IF means integrating factor. Find the integrating factor of the differential equation x into dy by dx minus y is equal to 2x square. अभी मेरा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब फाइंड आउट करना पड़ता है, कैसा टाइप का इक्वेशन होना चाहिए? ऑफ कोर्स इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, सो मेनी टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आर देयर, राइट? So integrating factor we can determine from linear differential equation. Yes or not? So there are two types of linear differential equation. One is dy by dx plus py is equal to q. Another one is dx by dy plus px is equal to q. So if the equation is in the form of dy by dx plus py is equal to q, then the integrating factor formula is e to the power integration p dx. If the equation is in the form of dx by dy plus px is equal to q, then the integrating factor formula is e to the power integration p dy. Yes? अभी ये p और q क्या है? In the first case, p and q are nothing but the function of x only. Whereas in the second case, p and q are constants or function of y only. ठीक है. If the equation is in the form of dy by dx plus py is equal to q, then p and q represent function constant or function of x only. Whereas in case of dx by dy plus px is equal to q, the p and q represent constant term or functions of y only. ठीक है. तो आइदर दिस फॉर्म में और सेकेंड फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन ये जो इक्वेशन दिया गया है, दिस इज नाइदर इन द फॉर्म ऑफ dy by dx plus py इक्वल टू q, नॉर इन द फॉर्म ऑफ dx by dy plus px इक्वल टू q. क्योंकि dy by dx और dx by dy का कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए. यस और नॉट?
बट यहां पे जो कोफिशियंट है dy by dx का is 1. Yes, so sorry, here the coefficient of dy by dx is x, so that means you have to remove the coefficient dy by dx. So कैसे remove करना है? So divide both sides by x only. So if you divide both sides by x, so then we'll get dy by dx minus y by x is equal to twice x. Yes, this equation can be written as dy by dx plus of minus 1 by x into y. This is equal to twice x. Now we can say that this is in standard form. Which form? dy by dx plus py is equal to q. Yes, so since the equation is in the form of dy by dx plus py is equal to q, you can check the function p in terms of x, q is also in terms of x. ठीक है ना? तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e to the power integration p dx. Here what's the value of p? Here p is minus 1 by x. Now since p is minus 1 by x, so e to the power minus integration 1 by x dx. That is e to the power minus integration dx by x. We all know log x. This is equal to e to the power log x to the power minus 1. ये जो माइनस है आगे लेके जा सकते हैं. This is equal to e to the power log of 1 by x, which is equal to 1 by x only, because we all know e to the power log of 1 by x is 1 by x, because यहाँ पे log का जो base है वो भी e है. So final answer is 1 by x. Okay, like this you have to arrange it first. So this is all about the second question. Now have a look at the last question, that is question number 7. Question number 7 क्या पूछा गया है? What is the sum of order and degree of the differential equation? Sum पूछा गया है किसका? ये differential equation का जो ऑर्डर और डिग्री होगा उसका सम क्या होगा? सो सम फाइंड आउट करने के लिए पहले ये डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना पड़ेगा. जो वैल्यू मिलेगा दोनों को ऐड करने से ही तो आंसर मिल जाएगा, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू चेक whether this differential equation is in polynomial form or not, because in order to find the degree you have to check the equation is in the form of polynomial or not. Here the equation is d square y by dx square is equal to 1 plus dy by dx whole square whole thing to the power half. Yes or not? ये जो रूट ओवर साइन इसका मतलब हाफ है. और मैं क्या बोला था? पॉलिनोमियल फॉर्म में है या नहीं है उसके लिए चेक करना पड़ेगा क्या? फ्रैक्शन. पावर अगर फ्रैक्शन में है या नेगेटिव में है तो वो पॉलिनोमियल फॉर्म में कभी भी नहीं होगा. सो दैट मीन्स क्लियरली वी कैन से दैट द इक्वेशन इज नॉट इन polynomial form, because here the right hand side part you can check the power 1 by 2 फ्रैक्शन में है, तो इसीलिए पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है. लेकिन इसको रिड्यूस कर सकते हैं इफ इट इज पॉसिबल. जब ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करना है ना, हमेशा ब्रैकेट में इफ डिफाइंड बोल के ऐसा दे देता है, बिकॉज इफ इट इज पॉसिबल देन you have to reduce the equation into polynomial form. If it is possible. If it is not possible, then there is no way. Okay, so if it is possible, then first of all you have to convert or you have to reduce this equation in polynomial form. Yes, we can reduce this equation by squaring on both sides. So squaring कर दो, d square y by dx square whole square, this is equal to 1 plus dy by dx whole square. Yes, now clearly we can say that the given differential equation is in the form of polynomial. Now what is the order of the differential equation? मतलब मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है? 2 बार. d square y by dx square, so we can say that order of the differential equation is 2. What about degree? Degree means the power of the highest order derivative. The power of the highest order, this is the highest order derivative. इसका पावर कितना है? 2 only. So degree is also 2, order 2, degree 2. Therefore the sum of order and degree of the differential equation is 4. So final answer is 4. So like this type of questions are important. तो ये जो questions अभी डिस्कस किया है सब differential equation का questions है.
डिफरेंट चैप्टर्स का ऐसा 1 मार्क का क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा एवरीडे. सो थैंक यू फॉर टुडे.